अभी टास्क 3 पे जाते हैं। Recently commissioned market research has concluded that smartware appears to have no clear understanding of the profile of its the customer mix, and as a result operates quite unsophisticated and ineffective marketing campaigns. Recent financial results indicate that smartware is finding it hard to both retain and get repeat business from its existing customers. And company is clearly losing market share to both established competition and newer e-retailers. कंपनी जो है वो बहुत सारे जगहों से शेयर खो भी रही है। recent results indicate that smartware is finding it difficult to both retain and repeat business from existing customers, and the company is still losing market share to both established competition and newer retailers. ठीक है. The sales and marketing director has been considering the development and implementation of sophisticated customer database management system, incorporating a customer loyalty scheme to replace the existing very basic customer database. The marketing department has undertaken a financial appraisal of this proposal to supplement the market research findings, and this indicates that it is financially viable in the net present value terms. You have advised the sales and marketing director you have advised the marketing director that for the board to agree with the proposal, a clearly stated business case and more reliable evaluation of the financial viability of the project will be needed. She agreed and asked you to help her in this. मतलब मैंने ही बोला और मुझे ही काम दे दिया, ठीक है. Write a report on behalf of the sales and marketing director for presentation to the board which achieves both of the following. अच्छा, मुझे बस एक चीज चेक करनी कि इन्होंने जब जब ये लोग रिपोर्ट ऐसे बताते हैं कि ए और बी के लिए, तो इन्होंने कैसे लिखा है? टू फ्रॉम तो इनमें है ही नहीं. थ्री थ्री. अरे भाई, इन्होंने कैसे टू फ्रॉम लिखा है? हाँ, टू फ्रॉम लिखने के बाद इन्होंने ए और बी चालू किया अंदर ही, उसके अंदर ही. बस मैं वही चेक करना चाहता हूँ, ठीक है. नंबर 3, ए और बी. एम ए क्वेश्चन में क्या है? डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द लॉयल्टी स्कीम फॉर स्मार्टवेयर. ठीक है, बेनिफिट्स मैं लिख दूंगा. evaluates the marketing department evaluate the marketing department's NPV analysis that supports the customer database management system investment, questioning any underlying assumptions. ठीक है. ठीक ठीक है. तो बेनिफिट सबसे पहले क्या हो सकते हैं कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. In customer database management system, customer feedbacks can be taken into account, thus understanding where we as a company are lacking to satisfy the customer demands, and we can improve on our quality as well. Reputation in front of the shareholders is increased, that company is taking the customers database system, or is taking the aspect of customer retention and repeat business more seriously, and is taking actions which are beyond just the normal corporate principles of corporate governance and operations, ये अपन बोल सकते हैं. कस्टमर डेटाबेस. लेकिन अभी ये तो अपना एक बहुत ही रैंडम हो गया ना. दो और ट्राई करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर डेटा बेस के बेनिफिट्स होंगे. सिर्फ और सिर्फ कस्टमर डेटा बेस के बेनिफिट्स क्या होंगे? हम्म. तो वही आ रहा है कि कस्टमर्स विल बी रिटेन्ड एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन सेल्स वगैरह. अह, पता नहीं, कस्टमर्स विल बी फील वैल्यूड वगैरह. आई डोंट नो ये है क्या इसमें आर्टिकल में हो गया. नेगेटिव इंफॉर्मेशन. नहीं, इसमें भी नहीं है. हम्म, ये तीन मैंने बोले अब तक. एक बाकी सब तो काफी बेसिक ही आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ वर्क विल इंक्रीज वगैरह वगैरह. वो सब तो ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज एंड ऑल. उसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ लेकिन? क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज के आगे मैं क्या बोल सकता
कस्टमर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, customers data can be secured, confidential data can be stored and secured in the company। नहीं, ये सारे पॉइंट्स मैं मतलब लास्ट में ही बोलूंगा अगर टाइम बच गया तो। ये अभी के लिए इतने तीन ही ठीक है, 6 पॉइंट्स ले ले। जाए जाए दो अभी। आगे है evaluates the marketing department's NPV analysis that supports the CDSM investment, questioning any underlying assumptions made। अभी मेरे को देखना है evaluate the marketing department's NPV analysis। Marketing department's NPV analysis that supports the CDSM। देखो इन्होंने यहाँ पे ना कुछ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया हुआ है। First of all, how has the discount factor been taken into consideration? By what factors has this been taken into consideration? Total investment comprised of initial capital outlay, sales tax on purchase price recoverable to Noria tax authorities, installation and system testing cost, ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग बराबर है CDSM, 5 years मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर, वो ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट CDSM डायरेक्टली जनरेट एडिशनल कंट्रीब्यूशन फॉर न्यू एंड रिटेन कस्टमर्स। हम्म। हाँ एडिशनल, देखो ये सबसे पहले होता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन सेम कैसे, हाउ इज इन द एडिशनल कंट्रीब्यूशन अमाउंट बीइंग सेम। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, पेबल ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, क्योंकि हम लोग, अच्छा हम लोग ये 30,80,000 ये लोन से लेने वाले हैं शायद, तो इसके वजह से ये इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन आ गया है। द रीजंस फॉर व्हाई हैज द लोन नॉट बीन पेड टिल ईयर 4, ये भी अपन पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन इंक्रीज, है ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन इंक्रीज, वो एक पॉइंट है विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट ओनली। आई थिंक ये 3 4 पॉइंट्स है, यही 3 4 पॉइंट्स है कि एक तो इंटरेस्ट हमने पे क्यों नहीं किया, दूसरा हम लोग एडिशनल कंट्रीब्यूशन 22 ही अज्यूम करके क्यों चल रहे हैं, एडिशनल कंट्रीब्यूशन व्हाई वी अज्यूमिंग इट टू बी फिक्स्ड, दैट मींस in depth analysis has not been undertaken because they are taking additional contribution as fixed till year 4, because I mean, how can additional contribution for year 1 and year 4 be the same if we are able to retain and attract more customers to towards us, ये भी अपन बोल सकते हैं। The operating costs have also been the same, however actually in-depth analysis of what is included in the operating cost should be taken into consideration, because this operating cost, whether this operating cost involve the salaries of the employees or not, because if yes, then any promotion in the employee salaries or any staff redundancies if take place, then operating cost can also fluctuate। ठीक है ना, फिर इंटरेस्ट को हमने पे क्यों नहीं किया ईयर 4 तक, why are we not planning on paying the interest as it has been same, so discount factor 10% का ही हमने क्यों लिया है जबकि we have taken loan, right? So तो इन्वेस्टर्स ज्यादा क्वेश्चनिंग होंगे कि भाई लोन लिया तो मतलब वो ज्यादा थोड़े क्या बोलते हैं वो अ, च- चंचल टाइप्स होंगे कि भाई हमको ज्यादा मतलब वो रिटर्न चाहिए, सो वी हैव टू यूज अ हायर डिस्काउंट रेट, ऐसा मुझे लगता है, बट ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, तो सबसे पहले मैं ये सारा वो लिखना स्टार्ट करता हूँ, देन वी विल सी। ये वाला अच्छा लिखा, ये वाला काफी बेटर लिखा देन द अदर आंसर्स आई फील। या आई थिंक मैंने ये वाला ठीक लिखा है भाई, इसमें बेनिफिट्स में 3 ही लिखे, थोड़े कम लिखे। बढ़िया, 6 मार्क्स के लिए थे एंड आई रियली वांटेड टू गिव टाइम टू दी बिगेस्ट वो 10 मार्क का जो क्वेश्चन था उसके लिए मेरे को ज्यादा टाइम देना था, तो मैंने 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आंसर दिया। मैं कंक्लूजन फिनिश ही नहीं कर पाया, तो मैंने कंक्लूजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम लिया अबाउ माई
प्री प्री गिवन टाइम। सो ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है फिर, है ना। कहाँ गया अभी वो? ये टास्क 3 AB बोर्ड के लिखा है मैंने, फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग, आई थिंक ये सब मैंने बराबर लिखा ना, टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ ठीक है, डेट मैंने XXX लिखी है फिलहाल के लिए, डेट मुझे पता नहीं थी कि क्या लिख रहे हैं, तो मैंने बस वो चेक किया था कि क्या लिखते हैं लोग एग्जैक्टली। ना ये कुछ नहीं लिखा डेट के लिए। चाहे लोग वो रिपोर्ट के लिए डेट इस वाले आंसर में नहीं है, लेकिन यूजुअली लिखी जाती है, तो प्लीज लिखना है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। Benefits of the customer database system. Okay, introduction. The evaluation of any major business investment must consider a wide range of strategic and operational factors, and it seems apparent from the current performance of SmartWear that company is not effectively engaging with the customer database. The development of the customer relationship management system, which ये मैंने बराबर लिखा है पूरा, क्योंकि मैंने बेसिकली कॉपी पेस्ट ही किया, तो मैंने बहुत ज्यादा भी लिखा है ऐसा है। There are a number of benefits arising from the development of customer database systems for smartware. These include: first one, primary purpose of customer data systems is to help a business engage more effectively with its customer base by helping everyone in the company better understand the needs and requirements of the customers. Without a thorough appreciation of each relationship, it will be difficult for smartware to exceed customer expectation. Without a thorough expectations of each customer of each relationship, without a thorough appreciation, without a thorough appreciation we for each relationship, it will be difficult for smartware to exceed customer expectations and gain sustainable competitive advantage. Okay, हाँ ये competitive advantage भी एक point था. The CDMS provides users with ready access to relevant data using a single common and controlled interface wherever they work in the company, including overseas operations. CDMs empowers users to deliver a more responsive service to customers, which ultimately contributes towards their increased retention through the associated loyalty systems. Through a better alignment of customers and core business processes, a CDMS system can help the company attain greater market share. Actually, my greater market share नहीं लिखा, लेकिन मैंने reputation in front of the customers which will spread because of the word of mouth, मैंने वो सब लिखा है। मैं वो वर्ड वो लिखना चाहिए, मुझे लगता है greater market share is a very good term which I should by heart. Greater market share, greater market share, and grow more efficiently in its what target markets. In its target markets, the centralization of the customer and business process data offers the opportunity to convert these into meaningful decisions and profitable actions. बराबर बराबर, ये तो मैंने लिखा है, सेल्स बढ़ जाएंगे. बिग डेटा which accumulates in the CDMs is not it in itself a solution, but the basis for developing new insights which can be used to develop the business further. Having access to all customer and related business data in one database allows for more timely and well-informed decisions to be taken, which can enable the company to be more responsive to its core markets. A CDMS system will help smartware use this understanding of the marketplace and then to successfully target further growth. And the target will help smartware use this understanding of the marketplace and successful target to further growth. Okay. भाई बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये इतना मैंने नहीं लिखा, मैंने बस बहुत सिंपल सिंपल रखा है कि कस्टमर वो रिटेन हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बहुत बेसिक लिखा है मैंने. CDMS जो एक्चुअली क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ था वो भी मैंने फिर से लिखा है, तो एक 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 पॉइंट तो वैसा ही लिखा है. ठीक है. दी CDMS technology allows all staff
to get their work done anywhere at any time by providing a set of tools to improve customer relationship and the associated business process which matters. If the staff are unable to access customer data, they are unable to engage with customers. Therefore, by accessing the CDMS data remotely, it allows them to work at any location, so increasing their productivity. Controlling access to sensitive customer information. Controlling access to sensitive customer information is critically important and is required by data protection legislation. एक मिनट ठीक है. कंट्रोलिंग एक्सेस टू सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन, मैंने अगर एक्सेस कंट्रोल किया सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है, is critically important and is required by data protection legislation. This can be achieved by securely storing the CDMS database. This can be achieved by securely storing. अरे थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार मेरे लिए कंट्रोल करना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में गया. कंट्रोलिंग एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है. दिस कैन बी अचीव बाय सिक्योरली स्टोरिंग द सीडीएमएस डेटाबेस इन वन लोकेशन इन द क्लाउड व्हिच ऑफर्स सिग्निफिकेंटली ग्रेटर प्रोटेक्शन कंपेयर टू स्टोरिंग कस्टमर डेटा. नहीं यार, इतना क्यों ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग क्लाउड पे सेव करेंगे विच विल प्रोटेक्ट द डेटा मोर एफिशिएंटली देन स्टोरिंग कस्टमर डेटा लोकली इन स्प्रेडशीट्स ऑन मल्टीपल सिस्टम्स. ठीक है, ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. ठीक है, विच विल मतलब बेसिकली इसका ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, बट यू यू यूजुअली क्लाउड डेटा कैन ऑल्सो गेट मतलब हैक्ड एंड ब्रीच, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ठीक है. थ्रू हाई लेवल सिक्योरिटी एंड ऑटोमेटिक बैकअप दिस डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, हाँ ओके, मतलब बैकअप्स एंड ऑल, ठीक है ठीक है. दिस डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन इवेंट. सीडीएम सिक्योरिटी profiles and settings enforce controls so that both teams and individual users have appropriate permissions to access records consistent with their role. हाँ, तो जो इनका रोल है उसी उसी हिसाब से ये लोग उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है. ठीक है. It is essential that the investment is also acceptable in financial terms by delivering enhanced returns to shareholders. The financial appraisal illustrates that the new system will deliver a net present value of $7 million. अच्छा, मैंने ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा गीला करने के लिए देते हैं और मैंने वो नहीं दिया. During the first 5 years of its operations, and this yields an 184% रिटर्न ऑन द इनिशियल कैश आउट. मैंने वो परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये इंट्रो ही नहीं दिया है. However, the NPV calculation is based on a number of underlying assumptions which are questionable in terms of the accuracy and relevance. मुझे लगता है अगर मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का वहां पे आ गया ना, मुझे एक चीज तो लिखनी है कि एनपीवी इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, विच इज अ गुड साइन. एनपीवी हम इनको पॉजिटिव आया है. हाउएवर इट इज बेस्ड ऑन वेरियस assumptions which are as follows, blah blah blah, ऐसा. ठीक है ना. सो लेट्स फर्स्ट रीड. Contribution being the excess of revenue generated after variable costs have been deducted. It is also constant at 22 throughout the 5-year period. The estimated amount is questionable because it would be highly unlikely that such a large benefit could be gained in the first year. Oh, नाइस नाइस. मैंने इसका एक्चुअली इसका उल्टा लिखा है. मैंने लिखा है कि जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, क्या यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे यहाँ पे स्टैग्नेंट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन भी मतलब बढ़ते जाएगा. बिकॉज ईयर 1 पे जो है और ईयर 4 पे जो है वो एक्चुअली सेम नहीं हो सकता है ना. लाइक ऑब्वियसली बात है, अगर ईयर 1 और ईयर 4 का सेम ही है तो फिर ईयर 4 फिर इम्प्लीमेंट करने का फायदा क्या था अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन सेम ही रह रहा है तो. इन्होंने क्या बोला कि ईयर 1, तो मैंने बेसिकली की बोला कि ईयर 4 में बढ़ना चाहिए. उन्होंने बोला कि ईयर 1 में कम होना चाहिए, विच एक्चुअली मेक्स सेंस. इनका ज्यादा मेक्स सेंस बिकॉज ऑब्वियसली पहले साल में कम प्रॉफिट्स होंगे, राइट. एंड ये लोग नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे. मुझे लगा कि मतलब पॉजिटिव के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि ऐसा कि बड़ा क्यों नहीं. इट इज ऑल्सो हाईली अनलाइकली टू बी कांस्टेंट, ठीक है, assumed to rise each year. हाँ, ये भी मैंने बोला. अच्छा, ये भी मैंने किया कवर. As it should reflect the company's forecast sales profiles, which should be assumed to rise each year, as this is fundamental to the justification of the CDM. बराबर, ये भी मैंने सेम लिखा हुआ है. This amount will also be impacted by inflationary pressure. हाँ, ये नहीं लिखा है. And for both these reasons, these benefits should be
forecast to rise annually from a low initial figure over the 5 year period under consideration. ठीक है. The total investment figure of 38 million includes the cost of 5 years maintenance and support contract. मैंने वो बाइफरकेशन नहीं पढ़ा था, मैं वो नहीं लगा कि उसके अंदर मैं कुछ बोल पाऊंगा. It is more likely that the agreement is to pay a maintenance charge each year. It is more likely that the agreement is to pay a maintenance charge each year rather than the whole amount at the start of the 5 year period. Therefore, this cost should have been spread evenly over the duration of the contract period by allocating 20% of the total contract sum to each of the 5 periods. The terms of the agreement need to be reviewed so that this can be clarified. तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का बाइफरकेशन दिया तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं दिया होगा ना. ऑब्वियसली मैं भी एक चूते की तरह जैसा देख रहा हूँ. ऑब्वियसली उन्होंने अगर बाइफरकेशन दिया तो इसके अंदर कुछ तो चीज है जो फालतू है और जो गलत है. तो ये फायर मेंटेनेंस था जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है. मेक सेंस यार, कंप्लीटली मेक सेंस. ये चीज आनी चाहिए थी. मैं जो वो चीज देखी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 5 पॉइंट थे तो मैं सोचा 5 पॉइंट मैं ऐसे ही वो लिख देता हूँ. It is known that during the period of economic recession, inflation can run quite high. Despite this, the cost of operating the CDMs is set. Okay, इन्होंने कॉस्ट को 2 मिलियन कांस्टेंट का और पॉइंट ये वाला दिया है. मैंने बोला है कि एम्प्लॉयज की अगर सैलरी उसके अंदर आती है तो मतलब हमने प्रमोशन को कंसिडर ही नहीं किया है. This is quite unrealistic, and unless all prices and costs are expressed in terms of monetary, in money terms, rather than real terms, the marginal effects must be accurately reflected in the cash flow. फिर आया है the 8% interest payable on the loan should not be included as a separate cash flow item, since it is part of the financing decision and is included within the discount factor. एक minute. The 8% interest payable, the 8% interest payable on the loan should not be included as a separate cash flow item, since it is part of the financing decision and is included within the discount factor. मैंने इसका एक अलग ही पॉइंट बनाया. मैंने इसको बोला कि इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग पे क्यों कर रहे हैं, जबकि डेट हमको पे धीरे धीरे करके करना चाहिए, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली डेट कैसे दे रहे हैं. ओके, राइट. इंटरेस्ट पेमेंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि बेसिक गलती यार, बेसिक गलती, बेसिक गलती, बेसिक गलती. क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट वो डिस्काउंट फैक्टर के अंदर ही होगा ना यार, ऑब्वियसली. This means that using the current weighted average cost of capital is not truly reflective of the financial risk associated with the investment. However, यहाँ पे, however, if interest costs are included in the cash flows, the equity cost of capital, not weighted average cost of capital, should be used in the computation. However, the equity cost of capital, which would be higher rate due to the financial risk it incorporates, is not available in this case. तो मैंने कहीं ना कहीं ये लास्ट का थोड़ा सा ग्रांड लिखा हुआ है कि बिकॉज ये सिर्फ 10% कैसे है, क्योंकि इक्विटी वाले जो है शेयर होल्डर्स वो हमसे ज्यादा मांगेंगे, राइट. सो बेसिस ऑफ वो डिस्काउंट फैक्टर मैंने बोला है, लेकिन मैंने बहुत छोटा बोला है. और वो इंटरेस्ट के पॉइंट डालेंगे ऐसे उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये गलत है. मेरा ऑपरेटिंग भी बहुत गलत है और कोवेनेंट थ्रेड तो कोई थ्रेड है भी नहीं, तो मैं इसको लास्ट में रखा था. ये कोई जेन्युइन थ्रेड है ही नहीं. सो नहीं यार, ये थोड़ा बहुत मैंने हगा ही है ये वाला क्वेश्चन. मुझे लगा था मैंने बहुत सही अटेम्प्ट किया, बट नहीं. Corporation tax is correctly charged or refunded against the net cash flow. However, the tax rules regarding this type of investment need to be considered, as it might be possible to claim allowances. These have not been considered or included in the NPV computation, but could be a significant financial incentive for SmartWear. Any allowances claimed would increase the post-tax net cash flows and improve the resultant NPV. ठीक है. It is probable that there would
भाई 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 भाई, ये भी बहुत ज्यादा है. ओके, वेट अ सेकंड. इट्स प्रोबेबल दैट देयर वुड बी नीड टू It is probable that there would need to be injection of additional working capital to operate CDMS post implementation, and this is relevant cash flow. However, as this is viewed as a 5-year project, the additional working capital invested would be returned to SmartWare at the end of the period of 5. Okay. हाँ, वर्किंग कैपिटल यूजुअली मिल जाता है ना बाबा, मतलब वो फिर से एक बार ईयर एंड पे. तो वो इन्होंने कंसिडर किया है क्या कि नहीं नहीं किया है, ऐसा बोलना चाहते हैं. ठीक है. मैंने एक ही सही चीज बोली यार पूरे ऑपरेशन में. मैं तो और थोड़ी बोल सकता था. बाइफरकेशन के बारे में बोलना चाहिए था. कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशन था, वो स्मार्ट चीज थी, वो मुझे नहीं समझी. कैश फ्लो के अंदर इंटरेस्ट है, वो गलत है. राइट, तो वो दो तीन चीजें हैं. ठीक है. So now we move to task 3. Severe criticism was forwarded to the chairman of SmartWare for an influential institutional shareholder for what it perceived as the short-sighted and narrow focus of the board on the low cost, low price model. However, the board considers this criticism to be unjustified since since its focus has always been on the wider and longer term strategic interests of Smartware that has enabled it to achieve sustainable business growth. The board believes the most probable reason for criticism is the lack of understanding by certain investors of Smartware business rationale and the company's integrated thinking. To, to further improve the effectiveness of communication with investors and wider stakeholder community, the board of Smartware decided to adopt its own version of integrated reporting framework. The board unanimously agreed that the best results would be achieved when the company takes a more holistic view of its operations and performance. And so you are asked to brief the board on how to make this message clearer to investors. ठीक है? You have been asked by the CFO to help him make the case and persuade the board and his own finance team that integrated thinking and integrated reporting framework should be adopted at SmartWare. Prepare one slide with appropriate notes for a brief presentation to be given by the CFO at the next board meeting, which describes the benefits of integrated thinking within SmartWare to all stakeholders. Prepare a briefing paper for the CFO to allow him to address the wider finance team to explain how corporate reporting using integrated reporting framework provides more relevant information for SmartWare shareholders about the creation of sustainable long-term value. Oof. हम्म, एक में ब्रीफ. अच्छा ठीक है, तो मुझे करना है टास्क 3D. तो मुझे यहाँ पे स्लाइड्स में करना है टास्क 3. ठीक है. 3C. ठीक है ना. अच्छा, एक मिनट. मैंने अगर यहाँ पे टास्क 3C लिखा, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो क्या यहाँ पे अभी भी टास्क 3C लिखा है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो फिर ठीक है, तो फिर ऐसे टास्क 3C लिखने की जरूरत नहीं है. देन आई कैन मूव डायरेक्टली अहेड. नाइस, गुड गुड गुड. यहाँ पे मुझे बेनिफिट्स बताने हैं. ठीक है ना. तो ये बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के? इट हैज अ 360 डिग्री अप्रोच टुवर्ड्स लुकिंग एट द कंपनी. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हेल्प्स इन इंटीग्रेशन. नहीं, वो तो फालतू वर्ड हो गया ना. इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऐसा. Some stakeholders or shareholders might not be from the finance background, and therefore it will help ये, in therefore it will help smartware company to explain, and therefore they might not understand the financial figures or ऐसा सब बोल देंगे. Therefore it will become easier for a smartware company to make the 60 stakeholders understand about the and then potential investors invest करेंगे company में. Some stakeholders might be looking at a wider approach, such as वो sustainability principles or what is company social behavior वगैरह वो सब. तो वो यहाँ पे डाल देंगे.
ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो 360 डिग्री में आ गया ना, वो तो 360 डिग्री में डाल देंगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाले वो सारे पॉइंट्स तो है ही। एक मिनट, बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग विद इन स्मार्टवेयर टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ओके। तो will help shareholders believe that oh the company is taking more decision, मतलब वो वाला सेम पॉइंट जो अपने ऊपर लिखा वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे कि कहीं कंपनी इज टेकिंग मोर स्टेप्स rather than just the corporate governance, वो वाला पॉइंट डाल देंगे। कस्टमर्स के सामने हमारी वो रेपुटेशन बढ़ जाएगी बिकॉज वी विल स्टार्ट वैल्यूइंग देम एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस एज पर देयर ओन, वो मतलब क्या बोलते हैं, एज पर देयर ओपिनियंस एंड एम्प्लॉयज को हम ज्यादा महत्व देंगे। अभी ये 6 पॉइंट्स, 6 मार्क्स लिए इतना तो काफी है। Shall prepare a briefing paper for CFO to allow him to address the wider finance team to explain how corporate reporting in India reporting framework provides more relevant information for SmartWear shareholders. I think इसमें हम लोग को वो 4 कैपिटल्स एक्सप्लेन करने हैं, छह कैपिटल्स एक्सप्लेन करने हैं। एम्प्लॉय वो ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, सोशल या फिर रिलेशनशिप कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। कुछ कुछ पॉइंट्स ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे ह्यूमन कैपिटल वगैरह के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मेरे को पता नहीं है, एक्चुअली वो सप्लायर्स आ गए ना मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो वाले सप्लायर्स के डाल देंगे कुछ कुछ पॉइंट्स। सप्लायर वो सबसे लास्ट करूंगा, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग अटेम्प्ट चेक करते हैं। चलो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आंसर लिखा मैंने। मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन सी, मतलब ये जो था ना थर्ड वाला 3C, इसमें ये 4 एडवांटेजेस लिखे, बेनिफिट्स लिखे, और मैंने ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, ये मैंने सेम चीज यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल में कॉपी पेस्ट की। मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के अंदर मैंने सप्लायर्स के बारे में लिखा, लेकिन वो मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया, सॉरी वो मैंने इंटेलेक्चुअल कैपिटल के पहले अटेम्प्ट किया, बिकॉज इसमें इंटेलेक्चुअल में डालने लायक सिर्फ वो ऑनलाइन वेबसाइट का वो थिंग था। एंड मुझे लगा कि मुझे बस वो सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत टाइम लग जाएगा सर, लेकिन इसकी पहले वही अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर मैंने नेचुरल कैपिटल में 2-3 चीजें लिखी, एंड फाइनेंशियल कैपिटल में बस वो शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज करने के बारे में लिखा। मुझे वो लिखना था, बट फिर मुझे लगता है मैं वो इन दी मोमेंट भूल गया कि सब ऑप्टिमाइज करना, कि कोई भी वो डिसीजन दैट सब ऑप्टिमाइजेस द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज ब्रीच ऑफ पावर हैज बीन कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ पावर, वो सब लाइन में मतलब मैं वो भूल गया बेसिकली वो वाली लाइन डालना। सो ऐसा था। हाँ, इसमें 360 डिग्री अप्रोच मैंने लिखा, जहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के बारे में लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा कि ग्रांट्स मिलते टाइम बेनिफिट हो जाएगा ऐसा। अभी चेक करते हैं इनके बारे में। ओके, दे हैव रिटन अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स हियर। जितने बेनिफिट्स अपने को नहीं लिखने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, 6 माह के लिए इतने सारे बेनिफिट्स तो नहीं लिख सकते, तो ठीक है चेक करते हैं अभी। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड, ये बना, note that our typical candidate may only make 5 to 6 bullet points, but this answer includes a comprehensive range of points, हाँ, some of which a well prepared candidate might have made। तो ये 6 पॉइंट्स है, मैंने मैंने 4 लिखे थे, आई डोंट नो, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग इसमें क्या है, होलिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आउटलुक, ओके राइट, इंटीग्रेटेड थिंकिंग हैज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट राइट राइट। इम्प्रूव कॉर्पोरेट रेपुटेशन, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट, enhance stakeholder management, transparent and effective communication, effective risk management, increased connectivity, ठीक है। By taking a holistic or integrated approach, the board of SmartWear is provided with a full range of integrated factors which allows it to focus on creating sustainable business value from a strategic perspective. The strategic focus and future provides great insight to the interdependence between strategy, the business model and value creation to help the board turn around the business and create value. It should adopt integrated thinking as it will enable the alignment of the low cost price business model to the changing market opportunities and enable the company to improve performance sustainably। एक मिनट एक मिनट,
By taking a holistic or integrated approach, the board of SmartWear is provided with a full range of integrated related factors. Sorry, interrelated factors, which allows it to focus on creating sustainable business value from the strategic perspective. Thus, the strategic focus and future provides great insight to the interdependency between strategy and business model and value creation. ठीक है. Rather, the board needs to devise and implement a successful strategy which focuses attention on key business issues which drive performance and value creation in long term so that it can turn around business fortunes. The board needs to devise and implement a successful strategy which focuses attention on key business issues which drive performance and value creation in the long term so that it can turn around business fortunes. The integrated thinking utilizes a broader information base than traditional business decision making, which tends to focus on relatively short-term financial outcomes. The board's decision on whether or not to implement the proposed CDMS must be based on a range of integrated issues and not simply the appraised financial outcome. The board needs to implement successful strategy which focuses attention on key business issues which drive performance and value creation in the long term so that it can turn around business fortunes. Trade thinking utilizes broad information based on and traditional business centered thinking, which tends to focus on relatively short-term financial. Okay, तो हम basically ये long term के लिए सोचेगा rather than जो हमारा basic business है वो short term के लिए सोचेगा. Joined up thinking, which results in better performance, can be used to promote and market the business more widely. This will strengthen the corporate image and reputation of SmartWear. Okay, this will strengthen the corporate image. Hmm. And reputation of SmartWear and could allow it to capture even greater market share. ये मैंने सेम चीज लिखी है बस मैंने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से लिखी है कि उनके सामने इज्जत बढ़ जाएगी सो वी कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड रिटेन अवर करंट कस्टमर्स. मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो आई थिंक ठीक ही है. उसके बाद आता है integrated thinking can lead to improvements in the governance arrangements in SmartWear by enhancing accountability over the board base of business capitals as well as encouraging a greater understanding of their interdependencies. The resultant better corporate governance should offer greater assurance to stakeholders, to shareholders that the board is acting in the best interest. तो ये भी मैंने बराबर लिखा हुआ है कि बेसिकली हमारे शेयरहोल्डर्स के सामने इज्जत बढ़ जाएगी कि वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मोर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड जस्ट दी कॉर्पोरेट वो क्या बोलते हैं विच आर बियॉन्ड जस्ट दी बेसिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है a smartware at smartware employees can make a very valuable contribution to the operational effectiveness of the company. The knowledge and capabilities of employees must be developed and utilized to best effect, and this can best be achieved through integrated thinking. This management अप्रोच एक्टिवली एनकरेज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. ये मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं लिखा है लेकिन मैंने लिखा है कि एम्प्लॉयज के सामने वहाँ इज्जत बढ़ जाएगी. एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड टू वर्क and because of high motivation it will lead to greater quality of work. Empowers individuals to contribute delivery of high levels of performance. I think ये भी same चीज है. Successful stakeholder management is vital for any successful business as it enables the company to respond to demands of its stakeholders quickly and effectively. Okay, integrated thinking contributes to good relationship with key stakeholders as it considers how and what extent the company understands, takes into account and responds to their legitimate needs and interest. हम लोग क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उनके नीड्स को. ठीक है. एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले बाकी के 7 और 8 भी पढ़ लेते हैं. इंटीग्रेटेड थिंकिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द कंपनी सो by default improves the line and nature of internal communication. Okay, हाँ वो क्योंकि इंटरलिंक होती है ना कुछ चीजें ऐसा. This more transparent approach will improve interdepartmental cooperation and enhance efficiency and effectiveness of business operations. This should reduce avoidable and unnecessary costs being incurred and improves SmartWare's financial performance. Many investors struggle to understand how managing the relevant risk factors contribute to value creation over time into investment decisions because the information which is often presented is insufficiently strategic, comparable, and sector specific. As a result, there is a risk that capital is not being directed efficiently towards retail models at SmartWare, which create rather
देन डिस्ट्रॉय वैल्यू। नहीं, मुझे लगता है ये वो छठा पॉइंट ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। Two of the biggest challenges faced by any company are breaking down organizational silos and changing existing data capture processes. Integrated thinking will challenge these entrenched behaviors, allowing for improved connectivity of people and information, thereby giving the board a holistic view of the interrelated and dependent factors which affect SmartWare's ability to create value over time. ठीक है, not big enough. फिर आता है ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए ये वाला आंसर जो हमको बताना था। आई थिंक ये मैंने इसके अंदर अपने को 6 कैपिटल्स बताने थे, जो मतलब एटलीस्ट मैंने तो वही अप्रोच फॉलो किया है एज फार आई कैन सी। देखो इन्होंने भी यही सेम किया, फाइनेंशियल कैपिटल, देन इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, एंड सो ऑन। तो लेकिन इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा मतलब बड़ा दिया हुआ है। The integrated reporting framework is more informative model of external reporting to stakeholders as it gives them a broader and richer picture of the organization and how value can be created in the longer term and in a more sustainable way. It therefore gives them a better basis for decision making and whether to buy, hold or sell their investments and therefore gives them a better okay। तो ये चीज शेयर होल्डर्स के बारे में मैंने एक्चुअली लिखी है, लेकिन वो मैंने कहीं पे तो नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं लिखी हुई, ये मुझे ओपनिंग में डाल देना चाहिए था। अच्छा हाँ, ये जो 360 डिग्री अप्रोच है मैं उसको डाल देता, या फिर रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ द शेयर। अरे मैं रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स का ये जो पॉइंट है यहाँ पे बेनिफिट्स में, मैं उसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तरह डाल देता, सेक्सी रखता, आंसर भी मतलब बड़ा बन जाता। नाइस। I will now brief you on why shareholders will find it more useful model. Essentially, it is because integrated framework of external reporting focuses on a wider range of sources of value creation than traditional reporting model, which concentrates mostly on financial information. It is based on the concept that a wide range there are a wider range of of capitals which the organization has control or influence over, and how maintenance and development of these capitals over the short and longer term can affect and create value on other capitals including the financial capital। ठीक है। प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये बहुत सही है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये वाले सही है। To provide us a financial capital, including investors, by communicating broader and more relevant information, which can assist then in their investment decisions. The SmartWare board has decided that an effective way to promote integrated thinking throughout the company is to implement a version of integrated reporting framework. This will encourage more holistic thinking about the suitability of various strategic approaches, which both grasp business opportunities and mitigate business risks while building greater investor and stakeholder confidence in the company. Indeed, by improving internal management process IR can also lead to greater trust and credibility with customers, and this is key to Smartware's future success. Nice, ये बहुत सही था। अभी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर 6 कैपिटल्स आते हैं, तो उसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं अभी। Financial capital refers to a pool of funds which are available to Smartware, including both debt and equity finance. The focus here is on sourcing necessary funds rather than their application in the business. However, investors will want to know financial capital as being deployed in the past, what the future plans based around a holistic and well-rounded strategy might be. With more integrated thinking and integrated reporting provides far greater clarity on core business issues and performance which can be very reassuring to investors। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल कैपिटल है मैंने इसमें ऐसा लिखा कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। तो मैंने यहाँ तक ना प्रॉफिट्स के बारे में लिखा है, एंड उसके बाद मैंने फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर वो डेट और इक्विटी के बारे में लिखा हुआ है। आई एम जस्ट गोना आस्क माय प्रोफेसर कि इसमें फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर क्या बोलते हैं, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में डालना है या प्रॉफिट्स के बारे में भी डालना है?
In integrated reporting, do we in integrated reporting, there is a financial capital. In this financial capital, does it involve does it involve the profits made by the company and financing activities, equity, both involve profits made by the company, fits involve the sales and profits made by the company, or only the financing activities. बस मैं ये उनको पूछ लिया क्योंकि मैंने इसमें दो मतलब वो दोनों लिख दिया ना, वरना मैं सिर्फ इक्विटी और डेट के बारे में लिखता और उसके में ज्यादा वो लिखता कि डेट में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इक्विटी में शेयर होल्डिंग जाएगी ऐसा। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैं लिखा नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज फंडामेंटल टू फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, लिंकिंग इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, नॉलेज मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स टू द delivery of competitive advantage and careful management of supplier networks and understanding the changing market conditions through the new CDMS system will demonstrate a good use of the intellectual capital in SmartWear. Effective development of intellectual capital leads to innovation. Effective development of intellectual capital. Wait. Effective development of intellectual capital leads to innovation and investment in resources which can have a longer term and more sustainable benefit for financial capital. Which can have a longer, अच्छा तो innovation करना so that it can have a longer term benefit on our financial capital. तो आई थिंक ये फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर प्रॉफिट्स भी आ ही जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंपनीज, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। अरे मैंने ना वो नहीं लिखा कि एम्प्लॉयज के स्किल्स और नॉलेज को भी इंक्रीज करना चाहिए वगैरह, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी एक्चुअली एम्प्लॉयज के अंदर। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्मार्टवेयर एज retailers are reliant on their staff to generate business value. Understanding the importance of human capital in स्मार्टवेयर शुड फोकस मैनेजमेंट अटेंशन ऑन डेवलपमेंट टैलेंट। भाई क्रेजी, मैंने ये पूरा आंसर सेम लिखा है। वो नॉलेज और स्किल्स बढ़ानी चाहिए उसको छोड़ के, लेकिन बाकी पूरा सेम लिखा है। रियलाइजिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मैं वो लाइन भी लिख सकता था कि cost spent on the money used on human capital or invested in human capital is not cost spent but rather investment made, वगैरह ऐसा कुछ सेक्सी लाइन वो लिख सकता था। Social and relationship capital at SmartWear relates to specifically to the strength and efficacy of supply chain manipulation. I think efficacy also means efficiency only, but मुझे देखने दो थोड़ा। Efficacy meaning the ability to produce the desired intended results. Okay, okay, नहीं efficacy and efficiency, तो efficacy के अंदर मेरे अंदर ability है desired रिजल्ट लाने की, और efficiency के अंदर मैं किस लेवल तक उस चीज को लेके आ सकता हूँ, आई थिंक वैसा है ना। रिफर्स टू एबिलिटी टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। और एफिशिएंसी पर्टेन्स टू डूइंग थिंग्स इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे पॉसिबल, एम्फसाइजिंग ऑन ऑप्टिमल रिसोर्सेज। हाँ एफिशिएंसी, वो 3 E's भी आते थे तो उसमें, राइट राइट राइट, मैं कितने कम पैसों के अंदर कितना ज्यादा आउटपुट लेके आ सकता हूँ। राइट राइट राइट, वो होता था एफिशिएंसी। कहाँ था मैं? एफिकेसी ऑफ सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स एंड कस्टमर लॉयल्टी। इट इज ओनली बाय building such relationships that a retail company can operate as successful business. The proposed changes to improve supply chain management arrangement alongside the development of a new CDMS system will enhance social and relationship capital in SmartWear. Building social capital internally and externally leads to more motivated and productive workforce and engaged, loyal and profitable customers.
इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं है एक्चुअली, है ना। मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के अंदर से ही वो सप्लायर के बारे में लिखा, बट इन्होंने रिलेशनशिप कैपिटल के अंदर सप्लायर के बारे में लिखा है। हम्म। आई थिंक सोशल इन रिलेशनशिप, हाँ एक्चुअली मेक सेंस, उसके अंदर सप्लायर के बारे में डालेंगे तो बेटर है। Refers natural capital refers to any inventory of natural resources or environment assets which could provide a flow of useful goods or services both now and in the future. The promotion of a strong social and environmental responsibility ethos in the smartware will strengthen its reputation among consumer and the investment communities, such as adopting a responsible purchasing policy of sourcing local products. Sourcing local products where possible, hello, and using suppliers which have a more responsible attitude. Huh, suppliers also having more responsible attitude, because our prospects should have the same environmental approach that we have, or sustainable approach that we have, वरना उनके साथ डील नहीं करना चाहिए. And environmental management. A better reputation in these areas will make the company more attractive to invest in and do business with leading to an increase in financial capital over the long term, regardless of the short term costs of following such policies. Hmm. ठीक ठीक ठीक.